So let's read the question. A rectangular glass slab ABCD of refractive index N1 is immersed in water of refractive index N2, where N1 is greater than N2. A ray of light is incident at the surface AB of the slab as shown. The maximum value of angle of incidence alpha maximum such that the ray comes out only from the other surface CD is given by option A sine inverse n1 by n2 cos sine inverse n2 by n1, option B sine inverse n1 cos sine inverse 1 by n2, option C sine inverse n1 by n2 and option D sine inverse n2 by n1. So बच्चों here our key concept is total internal reflection. A ray of light get internally reflected if it is traveling from denser medium to rarer medium, and when angle of incidence is greater than critical angle. IC is the critical angle of the medium. So बच्चों in question आपके पास एक स्लैब है, ग्लास स्लैब ABCD of refractive index N1 and it is immersed in water of refractive index N2 और जो आपका इंसिडेंट रे है रे ऑफ इंसिडेंट एट द सरफेस AB इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अल्फा मैक्स तो वो ये कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस की सच दैट द फाइनल रे कम्स आउट फ्रॉम द अदर सरफेस CD ओनली। ऐसा कब होगा जब लाइट अंदर ग्लास स्लैब में लिमिटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा उसका only then it will come out from the surface CD. So firstly we will apply Snell's law at surface AB. So that would be sine I, that is alpha max, upon sine, let's say that it is refracting at angle R. So here it would be sine R, that would be equal to N1 by N2. And after getting refracted, it should get totally internal reflected ताकि तभी वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद CD से बाहर आ सके। तो यहाँ से हम स्नेल्स लॉ से सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं साइन एल्फा मैक्स के लिए। तो साइन एल्फा मैक्स विल बी इक्वल टू N1 by N2 sin R. That means alpha max is equal to sine inverse N1 by N2 sin R. This is our first equation. Now यहाँ पर फिगर में देखिए आप अगर लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी तो ये एंगल है क्रिटिकल एंगल। सी आई एम मेकिंग द डायग्राम हेयर। ये फिगर आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। ये है एंगल R and this is angle IC. So we can say that R is equal to 90 minus IC. So that means जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है that is equal to 90 minus IC. And अगर हम बात करें IC की so sine of IC is equal to N2 by N1. So that means IC का वैल्यू आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स N2 by N1.
Now, because R is equal to 90 minus IC, so R will be equal to 90 minus sine inverse N2 by N1. So using the value of R in equation 1. So alpha max का value क्या आ जाएगा? Alpha max will be equal to sine inverse N1 by N2 साइन R की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 90 माइनस साइन इनवर्स N2 बाय N1 एंड साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा अल्फा मैक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स N1 बाय N2 cos cosecant of sine inverse N2 by N1. So our final answer is option A, sine inverse N1 by N2 cos sine inverse N2 by N1. I hope you understood it well. Best of luck.